तो अभी हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट पे यहाँ पे, जो कि ऑथेंटिक सी फूड फिश बनाता है इन अंडमान, मेरे को जो बताया गया है। तो द नेम ये है वो रेस्टोरेंट, द लाइट हाउस रेस्टोरेंट। यहाँ पे सी फूड, ऑथेंटिक सी फूड मिलता है, जो कि मेरे को लोगों ने बताया। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, थोड़ा अपर एंड या फिर स्लाइटली आई थिंक खाने के बाद पता चलेगा वैल्यू फॉर मनी कितना है, बट देन प्राइस मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा कंपेयर टू कोलकाता। इट्स एक्सपेंस स्लाइटली चीपर कंपेयर टू कोलकाता, लाइक अरसलान एंड ऑल। ये मैं लोकेशन दिखाता हूँ आपको। इट इज़ नियर बाई दिस प्लेस। यहाँ पे एक पार्क भी है सामने, एंड इस तरफ जाएंगे तो ये अबरदीन बाज़ार है, जो कि यहाँ का मेन शॉपिंग एरिया है। एंड दिस इज़ द म्यूनिसिपल धर्मशाला। सो आप गूगल मैप में टाइप करोगे न्यू लाइट हाउस रेस्टोरेंट, तो वो ईज़िली आइडेंटिफाई हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है। ये आ गया हम लोग का सी फूड, एंड ये आ गया हम लोग का फूड, बेसिकली राइस। और ये क्या है? फिश करी प्रॉन वाला। और एक आइटम हम लोग ने ऑर्डर किया है, देखता हूँ वो कैसा है। जो दूसरे टाइप ऑफ फिश हमने ऑर्डर किया था, दिस इज बेसिक द प्रॉन करी। सॉरी, वी कुडंट वेट, भूख लगी थी तो दबा दिए हम। दिस इज द प्रॉन करी। तो खा के पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है। हाउ इज द टेस्ट? कैसा है टेस्ट? यम। हेलो दारुण। ओके। पास काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ फिश है। You'll find a lot of different variety of fish here. This is basically lobster. A variety of lobster. This is again a different type. This is something called surmai. It's very tasty. I have tasted it earlier. I have tasted this in Bombay. It's very expensive and it's very tasty at the same time. And this is the prawns. So nice place. This is the wash basin. सो आफ्टर लंच हम लोग निकल पड़े थे चिड़िया टापू बीच की तरफ, जो कि एक सनसेट पॉइंट है। बट ऑन द वे टू चिड़िया टापू बीच वी फाउंड दिस प्लेस। कितना प्यारा व्यू है, देखिए। सो दिस इज़ बेसिकली ए टेम्पल ऑफ आई गेस साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। इट्स बेसिकली श्री अल्लाकाईदाल Ayyanar temple. It's very beautiful. And right in front of the temple you have this beach. Hello. So the importance of this place is that in 1943 our tricolor was hosted here for the first time in 1943. So very proud moment for all of us. And let me show you this place. So it's written here, the unsung heroes who through their valor and sacrifice worked tirelessly during the freedom struggle to protect India and defend the colonial yoke. Beauty, man. Such a beautiful, lovely, small city. And the best part is that what I have seen here is the crime rate they have told is zero. So don't be scared if you are keeping your belongings here and there. The crime rate here is absolutely zero, what they have told, the local people have told. Such a pleasant city here.
दिस इज जो लिखा गया है इन 1943 आर फर्स्ट ट्राई कलर होस्टिंग इन इंडिया. Basically by Netaji Subhash Chandra Bose, the great freedom fighter. Corbin's Cove. Should we go here? No, first we'll go to Chiriya Tapu. So on the way to Chiriya Tapu, यहाँ पे बहुत सारे मैंगो ट्रीज है. In short, you can say this is a mango forest.
by sharing your story. And this is all about our trip to Andaman on day 1. This is the beautiful city of Port Blair. Hope you enjoyed our video. Do tell in comments which part of Port Blair did you enjoy till now. Stay tuned to my channel and see you in my next video. Till then, if you have not subscribed to our channel, do subscribe it. And if you like this video, do like and share it with your friends. Do visit Andaman.